वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम पे। क्या हाल चाल है सभी के? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे एंड फुल बूम मचा रहे होंगे। आ चुके हैं वापसी हम एक और कैरेक्टर की स्टोरी लेकर। आज हम येलन की स्टोरी करेंगे। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो। तो उसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की थी। येलन से हम पहले भी क्वेस्ट में मिल चुके हैं, बट अभी और डिटेल में हम उससे थोड़ा बातचीत करेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज की स्टोरी में। पर ये डिस्कॉर्ड के भाई अलग ही नशे चलते हैं यार, क्या बोलूँ मैं। डिस्कॉर्ड कह रहा हूँ, ये क्या नाम है, ओबीएस ओबीएस के अलग ही नशे चलते हैं। यो व्हाट्सअप शैडो भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। ऑल गुड ऑल गुड। देखो यार, ये ओबीएस ना, मैंने रात को स्ट्रीम की और मेरा ही चैनल कनेक्ट था। और मैंने आज सुबह भी एक बार कंफर्म किया था स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले कि मेरा चैनल कनेक्ट है या नहीं है। तो मैंने वो भी चेक किया। बस रात को एक बार लाइट गई थी, ठीक है, एंड में जब मैं स्ट्रीम कर रहा था तो लाइट चली गई थी। तो तब भी मेरा सेटअप होना चाहिए उस पर और मेरा अकाउंट कनेक्ट होना चाहिए था। और सुबह भी मैंने रीचेक किया था तो मेरा अकाउंट कनेक्ट था और मैंने स्ट्रीम को लाइव कर दिया और वो तब भी हाफलेट भाई के स्ट्रीम पर चली गई लाइव। अब ये पता नहीं क्या भाई, ओबीएस के क्या नशे होते हैं, क्यों होते हैं, और ये कोई आइडिया नहीं लगता। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है। खैर हम स्टार्ट करते हैं। Ad Astra. ये तो मैंने शायद कर लिए थे, हाँ, रात को कलेक्ट कर लिए थे ये डेली मिशंस। Quit following me. चलो हम रीलोकेट करते हैं। ये वाला था ना, तो चेक कर लेता हूँ मैं। क्या येलन का यही था ना? यही वाला है। ओके, तो येलन से मिलने के लिए हम एकदम रेडी हैं। वापस से स्टोरी में काफ़ी मज़ा आएगा। और डिटेल में जानने को मिलेगा हमें, थोड़ा सा जान पहचान होगी हमारी येलन से और अच्छे से। Go to second floor of Yan Sheng टी हाउस। ओके, वहाँ पर है। Too slow. ये रहा। अरे इससे क्यों बात कर रहा हूँ भाई, ये इधर अंदर जाना। इधर क्यों नहीं जा रहा है ये? यहाँ से अंदर नहीं आ Too सकते क्या? slow. एक मिनट, क्या ऑप्शन आ रहा है? इन दोनों का ऑप्शन आ रहा है बातचीत करने का। अच्छा, यहाँ से तो जाना है यार, सीढ़ियाँ दी हुई है साइड में। ओके। Uncle Tim, we're here to chat with you. हम्म। What a lovely surprise. Welcome. Oishi, why don't you go downstairs and get the shopkeeper to make us a fresh pot of tea? चलो टी हाउस। कैसे इंट्रोडक्शन होगा हमारा, कैसे I नहीं, कैसे heard मिलेंगे? that you've been traveling all over the place recently. I would very much like to hear your adventure stories. थोड़ी सी साउंड बढ़ा लेता हूँ मैं, ठीक है। वी आर मोर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ अंकल टीएन। Hoishin told you, didn't she? Don't worry. I'm quite all right. It's just the years gradually catching up with me. As I grow older, I'm starting to find that with many things, though the mind is willing, the flesh is weak. आपके पास ओयो का Especially अकाउंट है recently, क्या? I've noticed a ओ rather सॉरी, drastic ओयो drop in my नहीं, energy होयो। levels. ओयो का I अकाउंट है ना भाई, am यही still तो है। very much in good standing एक और है with the मेरे पास, बहुत Tianshu स्टार्टिंग में जब today. बनाया था। Nevertheless, एक और है मेरे पास। I wish to pass on the position before my mental acuity begins to decline beyond redemption. How difficult is it to
to transfer the Tianshu position? Oh, well, you see, the Tianshu is a rather unique position among the Liu Qixing. Historically speaking, the Tianshu rarely appears in public. We stay behind the scenes, planning and giving advice, so a public selection process would not be suitable. होयो ऐप पर है क्या एक अकाउंट? होयो ऐप पर We मतलब also want होयो to ऐप पर keep any नहीं है शायद। prospective होयो ऐप पर Tianshu मुझे पता नहीं candidates क्या है वो। free from influence by outside forces, so we tend to be as discreet as possible in their assessment and appointment. मुझे लगा होयो वर्स इसकी बात कर रहे हो, जो ये वाला जेंशन की गेम की बात कर रहे हो ना, For वही these है क्या? reasons, the incumbent Tianshu typically होयो लैब recommends और their candidate जो भी of होता है वो choice, and this is then इस साइट approved का। by the other Qixing members. So, in other words, you pick someone, and then Lady Kuching, Lady Ningguang, and the other Qixing appoint them? Correct. Unfortunately, due to my health, I won't be able to assess every candidate myself. Not to despair, however, because I found someone exceptionally capable to act on my behalf as assessment officer. In fact, I believe you recently became acquainted with her yourself. Oh? Who is it? I'm heartbroken. I thought it might take you a little longer than this to forget all about me. अरे आ गई। Fun! अरे 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 अरे, ये क्या मेरी स्क्रीन पे मकड़ी आ गई गाइस? ये कहाँ से आ गई? ओके, डिस्कॉर्ड पर चेक करो, उसमें प्रीमोज मिलते हैं। ओके, कॉर्ड पे एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे को। अच्छा, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, ये ऐसा अकाउंट नहीं है शायद मेरे पास। देखते हैं, बना लेंगे ये भी। Jackpot. Uncle Tian here asked me to assess 3 candidates for him. फाइनली येलेन, Fancy joining me? मतलब येलान। You'll be among the first to get to know इसका the नाम next सही से क्यों नहीं बोल Tianshu. पाता? Might be a good opportunity for you. हेलो सतु भाई एंड शेडो भाई, ओ वेलकम टू द स्ट्रीम। गोकू भाई वेलकम। हेलो। What do you think? इट्स अ गुड I think अपॉर्चुनिटी। so too. It can't be a bad thing to be on good terms with a new Qixing, right? All right then. Though, I gotta say, Uncle Tian, you say you're into behind-the-scenes planning? My work's of the covert variety too. Don't you think I might make a good Tianshu? ओके, मैं जितना चाहे उतना इस स्टोरी में इन्वॉल्व होना चाहूँगा, और जितनी लंबी चले ये स्टोरी उतना ही Yelan, अच्छा you want to be लगेगा the मुझे next Tianshu? दिल से। जब तक I'm not येलन opposed है to the स्टोरी idea, में। but I suspect Ningguang wouldn't let you go very easily after how long you've been working together. So, how about this? If your investigation reveals that none of the other candidates are qualified for the position, I'll recommend you for the job. Deal. Well, you guys take your time. Everything's all set for the assessments to go ahead. ओयो लैब ऐप बहुत काम का ऐप है गोकू भाई, बिल्कुल डाउनलोड कर लूँगा मैं। Meet me on the first floor मैं when you're अकाउंट भी ready. बना लूँगा। Until then, शेडो भाई, have a pleasant conversation. आपसे भी बोल रहा हूँ मैं, अकाउंट बना लूँगा मैं, Oh, टेंशन ना। and no need to pay for your tea. As the new owner of this fine establishment, this runs on the house. मैं तो साइट पे लॉगिन करके रखा हुआ है, मतलब साइट पे वैसे ओयो लैब करके है एक, साइट पे लॉगिन कर लिया था, बट मैं कलेक्ट करना भूल जाता हूँ, तो 1-2 बार किया है मैंने वहाँ से। हाँ, मैंने कल ही डाउनलोड किया है। You're बिल्कुल, all set? मैं भी कर लूँगा, चेक कर लेंगे अपन क्या Uncle सीन है। Tian seems really worn down. It's like all his energy
going. हेलो सर. अरे संजय भाई सर मत बोलो यार. ब्रदर्स, वी आर ब्रदर्स. संजय भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. Yeah, it may sound harsh, but Uncle Tien is past his prime. He's not cut out for this anymore. So he's recommended 3 candidates. Their names are Chinwei, Mingbo, and Zhi. ये नाम इतने डिफिकल्ट क्यों है, ये बताओ. उसमें क्या इतना Chinwei वो is है a कि wealthy बोल entrepreneur. नहीं सकते हैं. Mingbo works at the Liyue Ministry of Civil Affairs, and Zhi is focused on study and travel. Try to keep all that in mind. Of course, it doesn't really matter if you forget, since we'll be assessing them at UPI Pavilion in a short while. Chenwei, Mingbo, Jui. Paimon should be able to remember their names, but what does the assessment involve exactly? भाई वही ना यार, इतने डिफिकल्ट नाम है कौन याद रख पाएगा. थोड़ा मुश्किल है, पर कोशिश करनी पड़ेगी इसको भी. Let's leave that until we get to UPI Pavilion. All right. Heads in the game, people. The stakes don't get much higher than a change in the Qixing. We can't afford to miss anything, no matter how small. Got it. Okay. We'll keep our eyes wide open. बिल्कुल भाई, एकदम आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, इतना खोल के रखेंगे. पवेलियन टू परफॉर्म योर इंस्पेक्शन. चलो गाइस, इंस्पेक्शन स्टार्ट करते हैं हम. देखते हैं इस एरिया में आसपास क्या चीज़ें हैं. My legs are getting sore. What is wrong with this assessment officer? This is a huge occasion and I don't even get a chair. चैट में क्या प्यारी बातें चल रही हैं भाई, देख के बहुत अच्छा लग रहा है. I've dealt with all पता नहीं kinds क्यों of people अंदर in से my अच्छी time, फीलिंग आ but रही है. never have I been made to stand while I'm waiting for an appointment. Oh, I mean, That's called being complacent. If you're happy to just accept the way things are, you'll never be able to change anything in the future. oh, come on. That's just not. All right, you two. Let's not get into a big argument over this. It's not worth it. Qianwei, that was a bit uncalled for. And Mingbo, cut him some slack. We've all been standing around for a while. It's natural to be getting irritable. सत्तू भाई, लियो में कितने सारे वर्ल्ड क्वेस्ट बाकी पड़े हैं आपके? Look, मैंने एक भी नहीं how किया about शायद. this? मैंने There's no आसपास rule saying we're जितना obliged वर्ल्ड to क्वेस्ट मेरे को stand up वो while we बताता है ना. wait, so why don't we एक borrow मिनट. some chairs from the guild nearby? ये जो साइड में बताता है ना, जहाँ पे हम क्वेस्ट वगैरह चेक करते हैं, आर्कन क्वेस्ट वगैरह, वहाँ पे तो वहाँ पे जो वर्ल्ड क्वेस्ट बताए हैं वो सारे किए मैंने. बट ऐसे जाके मैनुअली जाके मतलब वहाँ पे वर्ल्ड क्वेस्ट से टकराया नहीं हूँ लियो में मैं. जैसे कि अचानक से वो आरा नारा वाले से टकरा गया था तो वैसे आ गया था वो. Fine. वैसा कुछ किया नहीं है मैंने, बट They're not करूँगा the मैं. best सारे quality करेंगे chairs, हम. to be sure. But सारे under क्वेस्ट the करेंगे. circumstances, it would be better than nothing. You enter the association. It looks like all Assessment. 3 candidates have arrived. क्या है ये? Okay. Oh, it was those 3. Mm-hmm. We'll meet them formally soon. Before that, let me run you through the assessment process. I've split it into 2 stages: current affairs and planning, and face-to-face interview. ओहो, फुल प्लान है In भाई, the फुल first प्लान stage, है. candidates are required to submit a manifesto for Liyue's development. In the second stage, we will ask them some questions in person. Writing a manifesto takes time, so I informed them of this requirement in advance. These are the reports they submitted. Wow. अच्छा जी, One of them is really thick. बहुत ज़्यादा ही नहीं है ये. It's also worth mentioning a stipulation I gave them. Whoever is appointed as the new Tianshu will be expected to implement their plan as put forward in their manifesto. Failing the occurrence of some cataclysmic event, they will not be permitted to change their plan. Therefore, these 3 piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues. There's still some time. Have a skim through, get a first impression of what each person's proposing. I'll be waiting off to the side. Just let me know when you're done. Okay.
चेक द कैंडिडेट मैनिफेस्टो सॉरी वही मैं सोच रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर है ना रुको रुको 1 मिनट पहले ढंग से बैठेंगे अब हम चेक करते हैं एक एक करके अरे ओके ही करेंगे भाई चेक ठीक है एलन की स्टोरी क्वेस्ट है क्या जी संजय भाई बिल्कुल ये एलन की चल रही है अभी एक एक करके सारे कैरेक्टर्स की कर देंगे हम स्टोरीज मैनिफेस्टो कवर्स डोमेस्टिक अफेयर्स poison affairs and checks and balances all in great details. The focus seems to be problem solving. It provides conscious and clear solution to various problems. It's so thick that you only have time to skim through it roughly. एक और रह गया investor address many commercial issues and provide some very penetrating analysis. His view seems to be that regulation and incentives are both indispensable. चलो Finished, huh? भाई ये What did you think? केस में आर्कन क्वेस्ट कैसे पूरी करूं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आर्कन क्वेस्ट अगर लॉक है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे जाके देखो Everyone picked जो it क्वेस्ट very करने का बोल रहा है वो seriously. करो उसके बाद आपका अनलॉक हो जाएगा वैसा कुछ है अगर तो Of क्योंकि course they did. कुछ They have आर्कन the क्वेस्ट chance के to be लिए picked as the new Tianshu, so करने you पड़ते can हैं यार bet सारी they're चीज़ें putting their best foot छोटी छोटी forward. चीज़ें भी करनी पड़ती हैं वर्ल्ड क्वेस्ट भी करना पड़ता है कभी कभी और कभी कभी वर्ल्ड क्वेस्ट बहुत बड़ा होता है वैसे तो बड़े ही होते हैं सारे And keep in mind, whoever gets in has to execute their plan और as स्टोरी क्वेस्ट written. भी करना होता है Nobody wants to have any regrets. व्हाट डिड यू थिंक That's for Yelan me to know and you to find out. We can talk more after the interviews. We'll see the candidates now. Let's do one at a time. Start with Chenwei. Yes, ma'am. Oh, so you two are the assessment officers, are you? अरे वाह इंटरव्यू टाइम गाइस I had assumed that given the great import of this situation, Lady Ningguang would perhaps be assessing us in person. I certainly hadn't imagined I'd be seeing two entirely unfamiliar faces. I trust you've read through my manifesto? I'd be more than happy to clarify any details you found difficult to grasp. It was written with an expert audience in mind, after all. Mind your tone, mister. अरे क्या बोल दिया इसने वर्ल्ड क्वेस्ट बहुत बड़ा पेन है बिल्कुल संजय भाई बिल्कुल Relax. It wasn't intended as a personal slight against anyone in particular. I was simply stating a fact. अगर इसको ऐसे एज अ साइज देखो और उसमें जो चीज़ें होती हैं कभी कभी कुछ कुछ बातें होती हैं तो वो थोड़ी पेनफुल होती है बट सारी चीज़ें करने में मेरे हिसाब से तो मज़ा है स्टोरी काफ़ी बढ़िया है अगर उसको समझो फील करो बस यही है भाई गेम में और क्या एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स Cloud Retainer? You know this Adeptus? Oh, yes, I remember now. You must be the traveler that people are constantly talking about. With your sterling reputation, you must have a respectable level of erudition. Perhaps you will be able to understand the concepts I have put forward. दो फ़ोन रखो Although हमेशा I shouldn't get my hopes ऐसा up. क्यों संजय भाई दो फ़ोन क्यों ऐसा क्यों Oh, is it my turn? यस Yes. Please Correct. introduce yourself. I'm, Mingbo. दो I work in the Ministry of Civil Affairs. I've worked there for, 9 years, 5 months, and 3 days. In that time, I've handled, 2,347 cases. ओए भाई साहब I have 12 active cases at the moment. They should be concluded in, बहुत ज़्यादा है ये तो 16 days? My current work is related to urban planning, and I'm also responsible for auditing the accounts. To be more precise, there are 3 parts to the accounts, namely, Is it just Paimon, or is he not very
good at public speaking. You know what? Let's leave the self-introduction there and move on to some questions. Oh, okay. Sorry. Forces are throw a few. Hello. Not gonna lie, I'm feeling a little nervous. What would you like to know? You're here to assess me, so ask away and I'll answer your questions to the best of my ability. Ability. सत्तू भाई एक इंटरेस्टिंग चैलेंज देखा है मैंने एक दूसरे यूट्यूबर के चैनल पे अपन भी करेंगे वो ओके Your गोकू manifesto भाई is मेरे को very बता देना wide in क्या its सीन है scope, but you don't seem to कर be लेंगे वो भी personally involved in many of the specific fields. How can you be sure that you have the ability to put your plan into action? दैट वाज ब्लंट Very fair question. I completely understand where you're coming from, but I'm confident in my plan. I've visited many different places, talked to lots of people with far more expertise than myself, and my manifesto is the conclusion of these efforts. Of course, two different problems can be interconnected in very complicated ways, and you might reach two very contradictory conclusions depending on which one you're focusing on. What I've tried to do is strike a balance. In other words, present an optimal solution to all the problems as a whole. How do you plan to determine whether you are right or wrong about your proposed solution being the optimal one? A great question. Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the UAI Pavilion evaluate any proposals before implementation. Post-implementation, it would all come down to the results. If it turned out that my judgment was to blame for poor results, I would take responsibility. Nice answer. All right, next नेक्स्ट question. क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन करेगी भाई He seems like a great guy. Everything he said was thoughtful and logical, and he was just a pleasure to listen to. Here's my take on what we just learned. As you saw, Qianwei is highly knowledgeable. He proposes many excellent ideas in his manifesto which effectively target the big issues. But he is very proud and incredibly stubborn. He doesn't care much about other people's feelings. ओके Mingbo's plan is more thorough and more measured. You can tell he's meticulous in his work, very detail-oriented. एक में अपन को अब एक रैंडम कैरेक्टर रखना है तो है और सभी वीकली बॉसेस को मारना होता है कम से कम टाइम में अच्छा But he and बिल्कुल भाई Qianwei are इंटरेस्टिंग लग रहा है otherwise करेंगे polar ये opposites. Mingbo is not very articulate and comes across as very timid in conversation. Perfect summary. Paimon couldn't agree more. You're good at this, Yewan. Last but not least, Jur-E. His manifesto is full of pertinent details, his methodology is sound, and his proposals cover a broad range of fields, which is quite a rare feat. The depth he goes into in each and every area means it can only be a product of painstaking work. Plus, he is modest and good at dealing with people. But what really interests me is that many of his views happen to coincide with Uncle Tien's. Having someone like Jur-E take the position would certainly put Uncle Tien's mind at rest. Great. We'll see. ग्रेट Let's go back. देखते हैं भाई कौन खरा उतरा है इंस्पेक्शन में उसके लिए इतने कैरेक्टर होने भी चाहिए ना अच्छा Too slow. पर हम एक ही कैरेक्टर रख सकते हैं ना एक टाइम पे ऐसा कुछ Follow है me. ऊपर जाना है अंकल चियान I see. Then it's more or less as I anticipated. All right. Then let me ask this. The ideas in Jur-E's manifesto are very similar to your own. Is there any particular reason behind this? और दूसरा चैलेंज में कोई भी दो बेस्ट 4 स्टार रख लेगा पार्टिसिपेंट और एक बॉस है सुमेरु का उसको मारना है अच्छा Oh,
समझ गया मैं. I didn't want to say anything when I gave you the list of candidates, for fear of affecting your judgment. But I can tell you now. करते हैं, ये वाला भी करते हैं. इसको संडे को कर लेंगे, है ना? मतलब कल ही कर लेंगे, जब सब लोग रहेंगे. जो लोग आएंगे एक बार उसमें डाल देना डिस्कॉर्ड पे ये चीज़ें, Those three तो वहाँ पे candidates लोग देख लेंगे. have सब जिनको all आना है वो studied under me in the आ जाएंगे. past. But Xin Wei went on to focus on his business, और and फिर Ming मिल Guo के has always been बॉसेस occupied मारेंगे, with his मज़ा work आएगा. at the Ministry of Civil Affairs. Of all of them, Juri was with me for the longest duration. Whoa! So how did you get to know them all, Uncle Tian? Chen Wei was referred to me by an old friend. Ming Guo came to my attention in the course of my work. As for Juri, that was pure happenstance. We first met while fishing. Gradually, as we got to know each other, we started discussing all sorts of topics. Juri came from a poor family, and his parents died when he reminded me of a younger version of myself. So I started out giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how quickly he got on. Sounds like he is a friend of you. Quite. And now, all of a sudden, he's grown into a mature young man. It's a joy to see, but it also gets one thinking. नहीं, फर्स्ट चैलेंज में अपन 4 लोग रहेंगे ना, और सभी के लिए एक रैंडम कैरेक्टर सत्तू भाई सिलेक्ट करेंगे. अरे भाई मैं क्यों यार, वो रैंडम देखते हैं, वो उसमें कुछ एक पोल सा होता है, तो वो पोल कर देंगे. ठीक है, वो मतलब सिलेक्ट करके उसमें सिलेक्ट करेंगे कैरेक्टर्स वगैरह, देखते हैं उसका सीन कैसा होता है, तो वो कर देंगे ताकि ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए जो भी रहेगा रैंडमली. और मज़ा आएगा यार ऐसे चैलेंज करने में. एक साथ रहेंगे और अलग अलग बॉसेस को मारना है, ये कहना चाह रहे हो ना? The young are growing up, and I am growing old. How time flies. Nope. I don't know, Uncle Tian. You still seem in pretty good shape to me. You might have another few years of work left in you, don't you think? Oh, you. There's really no need to console me. Having less energy than I used to isn't such a bad thing. It just means I finally have a good reason to retire and spend my days doing what old men like me should be doing. Going fishing whenever I feel like it. Sounds like you sure love fishing, Uncle Tian. Ooh, there's nothing quite like fishing to pass the time. Ooh, and freshly caught fish, they make the most beautiful fish soup with barely any preparation required. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखोगे भाई? मेरे को ऐसा कोई आइडिया रहता नहीं है कब मैच है क्या है, बट मैच में वही है, एंड में जो रहता है ना, कौन जीता कौन आ रहा, वो देख लेता हूँ. पूरा मैच तो नहीं देख पाता मैं. Fresh fish soup. Sounds tasty. Doesn't it? Also, some time ago, Juri purchased a very special recipe from an old fisherman. When we've been fishing recently, Juri always brings some extra ingredients he prepared in advance. The addition of these makes the soup taste even more wonderful. That flavor makes for a fond memory. But at my age, who knows how many more chances I have left to taste it again. Very many chances, I'm sure. Can Paimon come next time too? Paimon really wants to try it. Let's get back to the matter at hand. Uncle Tian, we've reported back. Do you have a verdict? I appointed you as the assessment officer. And had you not asked me why Juri's ideas were so similar to mine,
I was not going to mention my history with any of them. This decision must be guided by what is fair and right. Please disregard all other considerations and make your final decision only after a thorough review of each candidate's talents and capabilities. 2 बजे स्टार्ट है. ओके, मैं वही है हाइलाइट्स वगैरह देख लेता हूँ. Remember, बट मेरे को ऐसे कोई आइडिया you रहता नहीं है must be thorough. कि कब है मैच, क्या है क्या नहीं है. Understood. हाइलाइट्स आ जाती है, मैं देख लेता हूँ. Come on, let's go talk somewhere else. Bye bye, Uncle Tian. Look after yourself. You follow Yellen outside the tea It's house. gonna be Jerry, right? His manifesto was written well, and he's the best speaker. Easy. Let's not rush. There's no time limit for this assessment. Huh? So, are you gonna give them more tests or something? No, nothing like that. The assessment itself is complete. But let me give you a word of advice. Things are not always as they appear. The biggest no-no in intelligence work is to only get information from the person of interest themselves. The truth is almost always hidden beneath many layers of deception. You have to get information through many different channels. For example, Yes? Lady Yelan, what are your orders? अरे वाह. Ugh! Who are they? Where did they come from? did they scare you? These two are Wenyuan and Shanghua. They work for me. क्या निंजा विंजा है क्या As ये? my trusted assistants, they are always standing guard nearby. They also perform various assignments as required. Shanghua is a business expert who gets his information by trading. Wenyuan relies on word of mouth. And there's also UPI, who's not here right now. That meathead must have been out there on sea surveillance for some time now. Is he all right? I seem to remember that he can't swim. Nothing can take that guy down. Certainly not a little wind and waves. Shanghua, visit all the commerce guilds and look into Qianwei's background. Wenyuan, go to the Ministry of Civil Affairs and look through Mingbo's work files. Yes, ma'am. So what about Jerry? Zhi, well, obviously, as the most promising candidate, we will be investigating him ourselves. पर यार देखा जाए तो उस चैलेंज को अपन कुछ लोग ही कर पाएंगे. मैं, संजय भाई, ड्रैगनल, मेगेत्सु, यू एंड हाफलेट भाई, जिनका एआर थोड़ा ज़्यादा है. वही चीज़ें हैं. दिक्कत इसमें यही तो है यार कि वर्ल्ड का थोड़ा सा वो सीन हो जाता है. अब सीन ये है ना कि अगर जैसे कि हम सब भी जैसे जितने लोग हैं वर्ल्ड में तो 4 ही आ सकते हैं, तो 4 हर बार चेंज होते रहेंगे या जो भी है. तो उसमें भी अगर हम सब इन्वॉल्व होंगे तो भी अगर बॉस को देखा जाए तो अगर हम किसी लोअर रैंक्ड वाले बंदे के सर उसमें जाएंगे ताकि और भी लोग कर पाए, तो उसमें तो यार एक ही कैरेक्टर अपना काफ़ी है मेरे हिसाब से. कोई भी एक कैरेक्टर हो तो वो चैलेंजिंग कैसे होगा उस टर्म में, तो हमें वो सब देखना पड़ेगा. वो तो है गोकू भाई, बाकी देख कर मज़े करेंगे. बाकी सबके पास इतने कैरेक्टर भी नहीं है और बिल्ड भी नहीं है. Let's वही go to the docks first. तो Lots of बात people है. passing through there. You can find out all kinds of things. देखते हैं If we're जैसा भी looking रहेगा. for information, why don't we try talking to Bulai, the owner of Wanyu Boutique? थोड़ा सा उसको वैसा रखेंगे कि लेवल वाइज जिनका कैरेक्टर है, मतलब जिनके वर्ल्ड लेवल है अच्छी खासी, उस हिसाब से रख लेंगे. क्या ही दिक्कत है. और फिर लो रैंक वाले अगर जो लोग होंगे तो उसमें वॉच कर लेंगे, है ना. He does business at the North Wharf. उनका एक साथ Maybe he रख has some देंगे. news for us. That's actually not a bad idea. Let's go and ask him. खैर ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि
नहीं करेंगे, बहुत लोग बिजी रहते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है सब फ्री रहेंगे उस टाइम पर। तो जितने लोग आ पाएंगे वैसा वैसा कर लेंगे भाई, Quit वरना और following चीज़ें me. तो है ही यार, ग्राइंड करते रहेंगे सबके साथ, तो वो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, यहाँ पर है। देखो वैसे और गेम्स भी Quit हैं following me. जो कि हम खेल सकते हैं साथ में, Huh? तो वो What's देख लेंगे, Ballard संडे doing को वो भी here कर लेंगे। today? हाँ, मैं और थोड़ा समझ के आता हूँ क्या सीन रहता है। Behold! ओके, टॉक टू बोलाई। Look, your asking price for this batch is just too high. I can't buy in at this price. How am I supposed to turn a profit? Come on, hear me out. I'm telling you, this is the single best batch of Sunsettias ever. You won't find anyone who disputes that. I accidentally dropped one into a well, and even the water turned sweet. Even so. Alright. I'll let you in on a little secret. The boss of Second Life also wants to buy from me, but I haven't responded yet. If you won't take him, I'll just have to partner with them instead. And neither of us wants that. Okay, well, when you put it that way, I'll accept your asking price. I'll take all your stock. Don't sell a single one to. The trader who was negotiating with Oh, बोला what है। are you doing here? वैसे हम पता है एक काम कर सकते हैं गाइस, हम एक काम कर सकते हैं संडे को। देखो लूडो में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मेरे हिसाब से 6-7 जितने भी होंगे, है ना। एटलीस्ट 6-7 लोग एक बार में वो कर सकते हैं, उसमें खेल सकते हैं। तो वो देखते हैं, उसका सीन बनाते हैं कुछ। ऐसे ही कुछ गेम्स रहेंगे जिनमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें रहेंगी। तो और वो ऐसे गेम्स भी हैं जो कि सब डाउनलोड कर पाएंगे, खेल पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो वो मैं कर सकता हूँ, वो हम वैसे कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो देखते हैं अगर वो हो पाए, लूडो टाइप के गेम्स, या लूडो ही खेल लेंगे। And to be clear, these Sunsettias are mine. I got to them first. Don't get any ideas. नॉक योर सेल्फ आउट। 1 मिनट रुको ज़रा गाइस, अभी कंटिन्यू करते हैं, बस 1 मिनट रुक जाना। Actually, we want to ask you about a guy called Juri. Have you heard of him before? Juri? Yes, he's quite well known. I've heard a story about him. They say he was born into poverty. His parents died when he was young, and he was treated cruelly by the local community. One of his neighbors was terribly rude to him all the time, but Juri never retaliated. And when his neighbor went bankrupt, he even helped support the family. He returned cruelty with kindness, injustice with peace offerings. A gentleman of talent and character, and how did I not notice him sooner? In fact, maybe I'm not too late. If I could hire him to be the brand ambassador for Wanyo Boutique. Oh, he sounds like a decent man. We can finally breathe a sigh of relief. Why are you asking about him anyway? You aren't looking for a brand ambassador too? Well then, in that case, the higher bidder takes the... that's Juri right over there. Why don't we go and talk to him? Where? It's him, all right. Looks like he's chatting with Lin Long. Come on, let's follow them and listen in.
Try not to let him see you. We want this information to be as truthful as possible. I'll just go and fetch an employment contract. And hey, don't try and cut me out of this. I understand. Let's walk and talk. So, you're अरे नहीं। looking to buy... What's the hurry? Don't get too close, or he'll see you. गड़बड़ हो गई। हमें थोड़ा सा स्पाई वाला Try काम not करना to है let यहाँ him see you. We want this information to be as truthful as possible. पे। अच्छा जी, I मैंने देख नहीं पाया understand. था Let's क्या walk हुआ। and talk. शांति से चलते हैं, एकदम शांति से। हमें चुपचाप ये बातें सुननी So, होगी। you're looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? थोड़ा आराम आराम से ही चलेंगे। The truth is, an old friend of mine who likes to have a drink now and then. He अरे मैं fancies दिख रहा हूँ, himself as a मैं दिख man of जाऊँगा। culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a set of high-quality fakes. How very thoughtful of you. Leave it to me then. What's the hurry? Don't get too close. अबे or he'll see पर you. यहाँ से कैसे देख लिया उसने? मैं तो इसके पीछे था। अरे भाई, Try चलो मैं not to let जाऊँगा him ही see नहीं। I understand. Let's walk and talk. ओके, अब मैं दूर से ही बात सुनूंगा उनकी। So, you're looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? The truth is, an old friend of mine who likes to have a drink now and then. He fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a set of high-quality fakes. How very thoughtful of you. Leave it to me then. Come and collect it at Shigu Antiques whenever is convenient. ओके, Thank you very much, Miss Linlong. It's my pleasure, Mr. Juri. These days, it's quite rare for someone of your standing to still keep up with their old friends. It's nice to see. I'll be sure to pick out a good set for you. You can count on me. सारी कन्वर्सेशन सुन ली हमने, देखते हैं। Juri seems to get along really well with everyone. Are you satisfied now, Yelan? Seems like everyone thinks Juri's a great guy. We shouldn't jump to conclusions just yet. Let's go check out the wharf where he usually goes fishing. Do we have to? Wait, you're not just trying to dig up some dirt on Juri because you want to be Tianchu yourself, are you? Maybe I am. Maybe I'm not. But hey, if I do become Tianshu, I'll look out for you guys. You'll be able to Okay. try all the finest food for free. How does that sound? We will? Well, come on! Off to the South Wharf we go! गो एंड चेक द साउथ व। ये देखो भाई, इतने सारे वर्ल्ड क्वेस्ट घूमते फिर रहे हैं, अभी एक भी नहीं किया है। ये भी करेंगे। Look, he really is over there. Hey, Songli. You too. We came to ask you about something. Would you mind waiting for a moment? I'm currently in the middle of something. What are you busy with? Speaking of which, to think you managed to return so quickly. What speed? Songli, are these your friends? They often come here to look for you.
Yes, they are old acquaintances of mine. Splendid. Since you two are also here, could you help me persuade Zhongli to sell his Arshia stone, please? Arshia stone, what would you want one of those for? Do you not know Siley Truth after now? It's not even a matter of price, for there is barely any supply on the market. I was telling stories as usual today, and Zhongli dropped by as usual too. Somehow we talked about my throat, the eyes of a dragon, one of my finest work, if I do say so myself. Oh, you mean that story? It's a good one, isn't it? Zhongli also says that my storytelling is superb. At first, I thought he was just an erudite gentleman who knew a lot about folk culture, but as it turns out, he is also well versed in history and my mythology. So now I often trouble him with the various questions I have got. Hmm. The pleasure is all mine. Don't be so modest. You help me a lot, but come to think of it, the act of chatting is pleasurable only because you are talking to the right person. Zhongli, for instance, is a good chatting companion with many fantastic ideas. And to be honest, lots of far fetched theories too. Hmm. There was this one time when I told him, see, my story first tells of how Rex Lapis carved Aza- Azdaha out of a magical rock and then elaborates on how they fought side by side across the four corners of the world. Isn't that just mesmerizing? Yet he said the story is a true masterpiece, save for some inaccurate details. According to some researchers, Rax Lapis may not have possessed the skill required to create such a work of craftsmanship. What a boomer! And there was also another time when I told him about the serpent of King's Village. He didn't buy the story at all, saying it was too good to be true for the serpent to transform into a beautiful landscape. I wonder if too much knowledge can stifle imagination. What a shame that someone as well cultured as Zhongli should fail to appreciate the aesthetics of artistic creation. I can hardly object to your criticism. I shall keep it in mind. But your stories are always marked by wild imaginations. I just point out what I notice as an ordinary listener and hope that it might be of use to you. Since storytelling requires a sharp mind, I am sure a storyteller such as you can certainly understand where I am coming from. Those are the heartfelt reaction from a devoted ऑडियंस मेंबर. वाह, आप बढ़िया एंजॉय कर रहे हो स्टोरी। संजय भाई बिल्कुल यार, हम ऐसे ही स्टोरी एंजॉय करते हैं, स्टोरी को पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि स्टोरी इस गेम का मेन पार्ट है मेरे हिसाब से। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यू आर राइट, आई नो योर गुड इंटेंशंस, यू वांट मी टू बिकम द बेस्ट स्टोरी टेलर इन लियो हार्बर, राइट? आई डोंट थिंक यू क्वाइट गेट इट। Why are we talking about serious here? Sorry, stories here. What has there got to do with the archaic arc क्या है? Archaic stone. सही पढ़ रहा हूँ ना मैं इसको? Yes, back on top, back on top. So I told through the eyes of a dragon again the other day. Aren't you ever worried that your audience
विल गेट बोर्ड इफ़ यू ऑलवेज टेल द सेम स्टोरी। बात तो सही है। सम स्टोरीज आर वर्थ बीइंग टोल्ड टाइम आफ्टर टाइम फॉर एवर एंड एवर। ये बात भी बढ़िया है भाई, बिल्कुल सही। दोनों दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। देखो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों अपनी जगह बहुत सही है, सही बात बोली है। स्टोरीज आर मीन टू बी टोल्ड repeatedly. It takes time and creatively to come up with new plots after all. See, Zhongli really gets me. Anyway, that day a miner, the leader of a mining crew, was out for work and happened to pass by while I was telling the story. He told me, well, do you know about the chasm? There is a type of incredibly beautiful stone to be found in that place. Such stones have a faint and exquisite luster. आपने पूरी आर्कन क्वेस्ट की है? बिल्कुल, बिल्कुल संजय भाई, मैंने पूरी आर्कन क्वेस्ट की है। सत्तू खाओ, खुश रहो। मैं किस्सू भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। बिल्कुल, सत्तू खाओ और स्टोरी पढ़ो और एंजॉय करो। यू कैन फाइंड देम समवेयर इन अ लॉन्ग एंड वाइल्ड winding tunnel in the chasm. What did he say? I think tunnel is the word he used, right? You could probably say that. The chasm must be quite the mysterious place if even someone as well traveled as Zhongli has never been there. I guess that's got to be because no one was allowed to go in until recently when mining operations resumed, and I only heard about that from others. Yes, indeed. The miner said that the stone springs forth within a tunnel. No one knows who built it. All they know is that the tunnel meanders forward as if created by someone dragging something colossal down. मैं जा रहा धोबी का काम करने। अरे बिल्कुल, बस संडे तो कल है ना, वो काम तो हम कल करते हैं मेगेत्सु भाई। सेम काम मैं भी करता हूँ वो। होस्टल बॉय, आई कैन अंडरस्टैंड। भाई घर पे भी वही काम होता है, सेम घर में रहता हूँ वही ना मेगेत्सु भाई। घर पे भी मैं तो वही काम करता हूँ, मेरे को ही सारा काम करना रहता है वो। अपने कपड़े खुद धोना पड़ता है, अपनी सारी चीज़ें, अपने रूम को साफ रखना पड़ता है एटलीस्ट, सारी चीज़ें उस हिसाब से है। वही बात है, पर वो दिन कल का है। फिर भी धोबी का काम वो तो सभी को करना पड़ता है। हम घर के धोबी भी होते हैं, शेफ भी होते हैं, और घर के क्या बोलते हैं, माली भी होते हैं, सब कुछ होते हैं भाई हम। एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ न्यू स्टोरी lately. I've been nice if I could put this plot into it. So I thought, हाँ करना पड़ता है लॉल। मुझे नहीं पता घर पर तो। So I invited Zhongli over to ask for his ideas, and to my surprise, he is in possession of an archaic stone. He said he bought it from a merchant at the market. Hmm. He is good. He he's got good taste and he won't miss a true। नहीं, ऑफिस के और अपने कपड़े फ्राइडे या सैटरडे को धो देता हूँ, संडे को नो हैसल। वही ना, हमें ये थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ता है। मैं जब स्कूल टाइम में, मेरे को अलग अलग ड्रेस धोनी पड़ती थी अलग अलग टाइम पे, तो ये संडे का, लेकिन संडे को पूरा काम कर देता था। कभी कभी उससे पहले भी करना पड़ता था, तो दो ड्रेस लेके चलते थे ताकि अगर एक नहीं धुली हो तो दूसरी काम में आ जाए। उस हिसाब से थोड़ा पहले सोचना पड़ता है। I was thinking that the stone could make an ideal testament to my story.
So if Zhongli doesn't object, I know I'd like to purchase the stone as a memento. Zhongli, are you really gonna sell him the stone? Yes, Tian is a ingenious storyteller, and I enjoy his story very much. It's my pleasure to be able to contribute to his creation. Wow, क्या बात है, क्या सोच है जोंगली की. That said, if I sold him the stone, it would undermine the credibility of his story. As we have discussed before, Rex Lapis sealed as Daha underground. You lucky, I guess. जब से कॉलेज में हूँ तब से पूरी फैमिली के कपड़े धोता था. जब जॉब लगी तो खुद के ही धोता. मुझे लग रहा है जॉब के बाद थोड़ा काम कम हो गया है. भाई ये जिंक्यू का मैक्स डैमेज कितना होता है? शैडो भाई, शैडो भाई को कोई बताओ गाइस, मेरे को आइडिया नहीं है डैमेज का. इसका कोई आइडिया नहीं है क्योंकि वो बढ़ते रहता है शायद आर्टिफैक्ट्स वगैरह से भी. और अगर लेवल की पूछ रहे हो तो लेवल का पता नहीं. According to experts, there are many caves and mining tunnels in the chasm. Shadow 500k ई स्किल्स का. ओ, मैं भी शिंगशू यूज़ करूँगा. मेरे पास है बट मैंने कभी उसको यूज़ नहीं किया. तो उसको भी बिल्ड करेंगे सारी चीज़ें. हाँ वो भी है. लेकिन भाई बिल्कुल ऐसा ही होता है. According to experts, there are many mining tunnels in the chasm. If would be a constant disturbance to people there if Azzaha really was sealed there. Would Rex Lapis not have considered that? That makes sense. You are right. Rex Lapis would not have done something so careless. Yup, that's a good point. To be honest, I wanted to exchange my favorite folding fan for Zongli's archaic stone. There an illustration on it. भाई ये स्टोरी में ये लोग बोल क्यों नहीं रहे कुछ? मुझे पढ़ना क्यों पड़ रहा है इसको? ये समझ में नहीं आ रहा. I love to have this fan in hand while telling through the eye of a dragon. Upon it is drawn a dragon soaring into the skies, its body free to roam the world and its spirit unbound to aim high. It's an inspiring view. This sort of fans really rare. You know, even Paimon wants it now. ये स्टोरी मत से है. हाँ ये येलन की एक स्टोरी कर रहा हूँ मैं. कल देखना था 4444 डैमेज. कल देखा था. अच्छा, क्या बात कर रहे हो, इतना डैमेज है? 44,444. वर्ल्ड क्वेस्ट है ना इसलिए. वर्ल्ड क्वेस्ट नहीं है संजय भाई, ये स्टोरी क्वेस्ट है. ये एलन का स्टोरी कर रहा हूँ मैं तो उस हिसाब से. पर पता नहीं क्यों ये लोग बोल क्यों नहीं रहे. को बोलना चाहिए. खैर ठीक है, पढ़ने में भी मज़ा है. देन वुड यू माइंड गिविंग इट टू मी. बट कुछ वर्ड टफ होते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार क्या. यू कैन हैव माई फोल्डिंग फैन. Might I have a word? The archaic stone is precious indeed, and your folding fan is also a work of art. I would advise against exchanging them as you would ordinary goods. Well, if you say so, actually, you know, I have more than one such fan. You drew the illustration on them, and that's already makes them special. Anyone who enjoys your storytelling will rejoice if they were giving such a generous gift. फिर आवाज़ क्यों नहीं आ रही? पता नहीं भाई, वही ना. यार ठीक है,
Helium, you are right. I truly am fortunate to have devoted listeners who understand my stories, and I could not ask for more than that. Could I? To be honest, I made these fans so that I could one day gift them to like minded audience. ऐसा तो नहीं कहीं ये मतलब थोड़ा सा अलग सीन चल रहा है, कहीं गलती से मेरे से स्टोरी क्वेस्ट तो नहीं हो गया चालू? पर ये उसके बाद ही स्टार्ट हो रहा था ना, वो तो कंटिन्यू थी स्टोरी, पता नहीं. एंड यू सर्टेनली आर सच audience, so they were always meant to be yours. Please wait here for me to fetch them. I don't quickly fetch two foldings. And you certainly are such audiences, so they were always meant to be yours. Please wait here for me to fetch them. Can I really keep this? Of course, you are my audience, and that makes you a worthy recipient. Besides, I have made several such fans. So don't worry, just like it, just take it. And Zhongli, there's no need to be formal with me either. It's just a handmade fan. I hope it's not too meager a gift for you. I'll gladly take it. Thank you. An exquisite work of art indeed. It is truly something worth treasuring. Right, actually, we came to ask Zhongli about something. Can we talk to him for a moment? Have I taken up too much of your time, dear? Well, then please go ahead. There is no need to apologize. You have my gratitude. इसकी बात करने की जो टोन है ना, Zhongli, were you at the chasm and you saved us too, didn't you? हाँ हाँ, ये उस दिन की बात हो रही है शायद. हाँ यही है ना. Shao also said that he won't have been able to escape without your help. हाँ ये स्टोरी में वो था, आर्कन क्वेस्ट था शायद, वही चल रहा था ना, वही चल रहा था. तो उसमें शायद ये एकदम से अपीयर हुआ था थोड़ी देर के लिए. तो ये अभी उसके आगे की स्टोरी चल रही है ना इसकी. मतलब हम सही कर रहे हैं, सही जा रहे हैं. डिड ही से सो इंटरेस्टिंग हाउ टाइम फ्लाइज, इवन ही हैज़ लर्न टू ओपन अप टू अदर्स. वो शाय है भाई, वो बोलता ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करता. सो व्हाट वेयर यू डूइंग एट द कैज़म, ये तो मैं भी जानना चाहूँगा. Was I at the chasm? How curious. I must admit that this is the first time that I am hearing of such a thing. Stop playing dumb. I, why would I play dumb? This fan is of high quality indeed. Wrongly. Now that I am on vacation, I just take my time and walk around. I would say that anything I run into is a happenstance of fate for which I shall take no credit. वही ना भाई, यही तो है हमारा जोंगली. Came to think of it, it's nice to travel to different places and witness many things in this vast world. They always bring old memories back. Do you miss the past? Not at all. I am a mortal now, and being mortal means living in the present. A dragon soaring into the skies, its body free to roam the world, and its spirit unbound to aim high. Most inspiring indeed. Okay. It must to be perceived in the four corners of the world, and much to marvel at amongst mountains and waters. I believe I must travel still more in the future. चलो ये बातें इसकी जो हो रही हैं ये कनेक्टेड ही थी एक तरीके से. अच्छा ये फ़ैन वाला स्टार्ट हो गया था भाई, ये फ़ैन वाला स्टार्ट हो गया था, वही है. वही मैं सोचूं कि ये कैसे है. ये वो गलती से फ़ैन वाला स्टार्ट हो गया था, समझ गया मैं, इसीलिए साउंड नहीं आ रही थी. जोंगली बहुत झूठ बोलता है.
अरे वो अपने आप को वही है कि क्रेडिट नहीं देना चाहता, उस हिसाब से है। क्या करें, थोड़ा वो अपने आप को क्रेडिट नहीं देना चाहता, बस वही है। उसने हेल्प की पर वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि नहीं किए। गलती से वर्ल्ड क्वेस्ट कर दिया था मैंने स्टार्ट, इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। वो शायद पास में ही था कुछ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने वही है। The wharf is as busy as ever. I hear ये the है ना, anglers वही here मैं कह रहा हूँ, ये sometimes एकदम sell से their क्या हो गया। fish to the nearby fishmongers. Hmm. Let's see what Uncle Soon has to say. पर अच्छी बात है हमने वो पहले कर दिया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था वो। तो वही है कि अच्छा हुआ कि वो एक कोऑर्डिनेशन में उसमें पहले आ गया वो चीज़। ना मुझे आइडिया नहीं था कि वो बात अब कब होगी, कि कब वो हल्का सा अपीयर हुआ था, बट उसके बारे में चर्चा कब होगी। तो अभी हो गई, चलो बढ़िया है। टॉक टू अंकल सन। Take it easy. अंकल सन, ये रहे। Welcome. What would you like to buy today? जोंगली और वेंटी दोनों एक जैसे हैं। वो टी शॉप के पास चले गए होगे। हाँ वही ना, ऐसे ही कुछ हुआ है शायद। वी आर हेयर टू आस्क यू अबाउट समवन। Sorry to interrupt. We're actually members of the Liyue Anglers Association, and we just wanted to ask a few questions about someone. We've heard about this young man called Juri, who's supposed to be a fantastic fisherman. Just wondering if you happen to have heard of him? ये कैज़म के बाद का स्टोरी था, आपने अब किया। हाँ वही ना, वो मेरे को आइडिया नहीं था उस चीज़ का, वो अपने आप ही हो गया। चलो, वो मैं करने का सोच रहा था, मुझे लगा वर्ल्ड क्वेस्ट थोड़ा बड़ा होगा वो, और उसमें ये जो पंखा मिला है हमें, जो गिफ्ट एज अ गिफ्ट मिला है, तो वो मैं सोच रहा था शायद कुछ अलग सीन है, तो मैंने वो किया नहीं था। शायद वो अपने आप ही स्टार्ट हो गया इस हिसाब से, Whoa! You made और up मैं a देख नहीं whole पाया। fake identity without batting an eyelid. पर वो तो क्वेस्ट अलग ही था, मतलब वो स्टोरी क्वेस्ट में था, ये वर्ल्ड क्वेस्ट में था, या वो शायद आर्कन क्वेस्ट में था। हाँ आर्कन क्वेस्ट में था शायद, येलन के आर्कन क्वेस्ट में था, में मिलने वाले थे हम, और उसके बाद वही है, चाव सबको बचा कर लाया था, उसके बाद का था। हाँ वही ना, बट वो अलग सीन था यार, वो वर्ल्ड क्वेस्ट नहीं था शायद, वो आर्कन क्वेस्ट था, और उसके बाद हम ये करने लगे थे, या स्टोरी क्वेस्ट था, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, पर कुछ ही टाइम पहले किया था वो मैंने। इससे पहले जो एक मैंने बैनर लगाया होगा, जो थंबनेल था वो येलेन का लगाया था, ठीक है, तो वो वाला है, उसमें है वो स्टोरी, मेरे को याद है इतना तो वो ये सबको बचाने वाला था उस टाइम पे, और इसने बचा लिया था, उसके आगे की स्टोरी है वो। Ah, yes, Jury. समझ गया मैं। He's been making quite a name for himself recently. I've got some friends who travel all over the place, and they tell me everywhere they go they meet someone who's heard of him. Apparently, he had a rather tough time growing up. Had to work several jobs alongside his studies to make ends meet. How does that saying go? What doesn't kill you makes you stronger. Well, Yeah, we think so too. but I'm afraid your Anglers Association might be in for a disappointment. Oh? Why's that? He's good at a lot of things, but fishing isn't one of them. He fishes at the wharf and sells what he catches to me on occasion. ऐसा है सत्तू भाई, वो भी पहले आर्कन क्वेस्ट नहीं थी, इवेंट क्वेस्ट था, बट सबको इतना अच्छा लगा कि उसको परमानेंट आर्कन क्वेस्ट बना दिया था। ओ अच्छा, ऐसा। हाँ वही मैं सोचूं, क्योंकि हम दी कैज़म वाली स्टोरी में जाते हैं ना जब आर्कन क्वेस्ट में, तो हमें हमारी कोई हेल्प करता है पीछे से, और वो यलान होती है, ठीक है, उस टाइम पे। अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पर होती है, और वो उसको अच्छी बात है कि उसको आर्कन क्वेस्ट में रखा, क्योंकि ये उसके आगे की स्टोरी है, फिर हम वहाँ पे यलान से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वो होना ही चाहिए मेन पार्ट इस चीज़ का, मेरे हिसाब से। और उसके आगे की जो स्टोरी है जो बचा है, तो जोंगली भी उसमें इन्वॉल्व होता है,
तो मेरे हिसाब से उसकी आगे की स्टोरी को उसी में रखना चाहिए था, ना कि वर्ल्ड क्वेस्ट में रखना चाहिए था जो इन्होंने कर दिया है इसे भी। तो इसको भी उसी के साथ रखना था मेरे हिसाब से। His catches are always इसको वर्ल्ड क्वेस्ट में रखा गया था। mediocre. Not terrible, but equally nothing to write home about. If you're looking to recruit some new members, though, I do know a few top anglers I could put you in touch with. That sounds या तो स्टोरी क्वेस्ट fantastic. में रख देते हैं इन I've got a सबको एक couple of साथ। other things to attend to right now, though, so why don't I come back some other time and we can chat over a drink? Sure thing. See you. वो 2.8 का इवेंट था, उसमें भी आवाज़ नहीं आता। Everywhere they go, they meet वही someone मैं who's सोच heard रहा of हूँ। him. Come on, let's keep asking around. Okay. Continue looking for clues at WAF. पूछते हैं किससे, इससे पूछें भाई से। Here to buy some fish? It's 300 for one or 3 for 1,000. You better hurry. When they're gone, they're gone. अरे भाई, सेल चल रही है, सेल चल रही है, खरीद लें, खरीद लें। Hello, we're from the Society for Fish Price Research. We'd just like to ask a few questions. Wow, she switched identity again. एक और बेस्ट क्वेस्ट था ड्रैगन पाइन का, वो नहीं रखा इन्होंने। वही ना भाई, इतने बेस्ट बेस्ट चीज़ें अगर आप क्रिएट कर रहे हो, रखना चाहिए उसको एज अ मेन क्वेस्ट, या चीज़ों का थोड़ा सा वैसा है Society for मेरे हिसाब से तो। Fish Price Research. I haven't done anything illegal. Stay out of my business. बाकी गेम वालों ने कुछ सोचा ही होगा यार, उस हिसाब से भी। Please, don't worry. We're just here to conduct a simple survey. We've heard about a certain Jur-E who's been selling fresh fish at low prices in this area recently. So this isn't about me. You should have said something, you know. I know the guy. I can tell you what I know. I haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices, but it wouldn't surprise me if it was him. Oh? Why is that? Because he's so poor. His parents died when he was very young, and his alcoholic father still owed a huge amount of debt. No one wanted anything to do with him. He was खराब still a लगा यार kid when he सुन के। first came to the wharf. His clothes were ragged, and he had a bandage wrapped around his head. And he managed to survive, thanks to Uncle Tien, who gave him some food. But still to this day, he doesn't have a lot of mora to his name. I mean, he can afford to eat and everything, but you'll often see him haggling with others over just a few mora. So, I wouldn't be surprised to find out he's been selling a few fish. आपको लिंक भेजूंगा उसका, उसको देखना। मैंने भी नहीं खेला था, मैं भी तब गेम नहीं खेलता था। ओके संजय भाई, बिल्कुल मैं देखूंगा, मेरे को लिंक भेज देना उसका, मैं पक्का देखूंगा। एल्बिडो वाला, एल्बिडो। It's not like he catches much anyway, so it's not going to affect my business. Don't tell him I said that. You'd rather he didn't know? भाई इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इनको रखनी चाहिए यार गेम में, ऐसे क्यों हटा देते हैं? मेरे हिसाब से इनको वही एक पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे कि अब भाई स्टार्टिंग की चीज़ें जो हैं, अब वो अगर आप कुछ नया लेकर आ रहे हो उनमें, है ना, तो उनको हटाओ तो मत, एटलीस्ट वो भी रखो, नया वाला भी रखो। दिक्कत क्या है? Well, I spoke to him once briefly, and I just had a feeling that he really cares what other people think of him. I think he has pretty low self-esteem, but hey, it's hardly my place to say anything. What he's achieved already puts most people to shame. And nobody's perfect. I just wouldn't want to upset him. That's I see. Well, thank you for sharing that with us. not a problem. And just for the record, there's absolutely nothing wrong with the price of my fish. The more times you say it, the less convincing it becomes. ठीक है भाई। Doesn't have a lot of mora to his name. Okay, let's keep going. चलो, हमें इन्फॉर्मेशन से मतलब था ऐसा कुछ। कंटिन्यू लुकिंग फॉर क्लूज। एक और कौन है जो हमें बता सकता है कुछ इसके बारे Hey, में? it's you guys. Wait, what's the phrase? Oh yeah, honored to meet you.
हाँ उसका कट सीन बहुत बढ़िया है, फिर तो देखना पड़ेगा गोगो भाई, बिल्कुल देखूंगा मैं। What brings you to me? The truth is, we are but newcomers to this territory. We heard tell of a great martial artist, Master Dugu, who knows everything there is to know. Hence, we sought you out to ask for your guidance. अब जैसे कि इसमें इससे पहले मैंने शायद कल रात को मैं वो इवेंट कर रहा था, उसमें सब लोग एक साथ थे और कुछ नए मेंबर्स भी थे, ठीक है। अब वो मुझे पता नहीं है वो कैरेक्टर हैं, क्योंकि उनके पास विजन देखा था मैंने। तो वो ये कि ऐसे कुछ कुछ इवेंट वाले जो हैं क्वेस्ट, उनको मेरे हिसाब से स्टोरी में रखना चाहिए। अब वो इवेंट में चले जाएंगे तो वो जो नए लोग खेलेंगे, अब खेलेंगे जेंशन स्टार्ट करेंगे, तो उनके पास नहीं रहेगा ना वो चीज़, है ना। तो कुछ कुछ स्टोरीज बढ़िया होती हैं, मैं मेरे हिसाब से रखना चाहिए उनको, एक अलग ही सेक्शन में रखना चाहिए भले ही। एक ओल्ड इवेंट सेक्शन मेरे हिसाब से रखें तो मज़ा Really? आएगा। People said I know everything there is to know? भले ही उस इवेंट में वो कुछ ना दें, बट स्टोरी तो एटलीस्ट रखें उसकी, कि भाई ओल्ड इवेंट में जो लोग स्टोरी देखना चाहें वो रख सके, वो देखे। But of course, we also heard that Master Dugu is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone who comes with questions. सर्च करो एल्बिडो कट सीन आ जाएगा। ओके ब्रदर, बिल्कुल Great! So what मैं do you wish देखूंगा। to know? Nothing happens on this street that I don't know about. Now she's lying to a kid. बट इट सीम्स टू हैव मेड हिज डे। So, Master Dugu, have you heard of one by the name of Jur-E? Sure have. You mean that guy that all the grown-ups are talking about these days? I've heard many tales of jury. For example, I can't remember. मुझको याद ही नहीं Probably आ because it's nothing that important. I prefer stories about sword-fighting heroes. Oh, I can completely understand that. Then let me ask you this. Do you remember roughly when the grown-ups started talking about Jur-E? Oh yeah, I know that. It was about 2 or 3 months ago. Before that, people always used to talk about jury in a kind of nasty tone of voice. But 2 or 3 months ago, suddenly everyone started to like him. आपका एमसी ल्यूमिन है, वरना आपको नोएले क्वेस्ट करना चाहिए था, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो ऐसा भी होता है कि मतलब कैरेक्टर चेंज करने में इवेंट वो मतलब क्वेस्ट चेंज हो जाते हैं, ऐसा भी होता है क्या? भाई ऐसा होता है तो यार ये गलत बात है, कैरेक्टर अकेला चेंज होना चाहिए था यार। तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्या वो वाला क्वेस्ट? मुझे बताओ, अगर वो क्वेस्ट कहीं कर पाए तो वो भी करेंगे ये स्टोरी वगैरह के साथ, Sometimes he gives me candies. या इसके बाद। So I'm glad that people are starting to like him now. Just as I thought. Huh? What do you mean? I mean, just What as do I you thought, mean? Master Dugu is indeed as kind and virtuous as the legends claim. I'm not that great. Oh yeah, one other thing. These days, there's a lot of people I've never seen before talking about jury stories in the street. They seem like nice people. नहीं, क्वेस्ट तो होगा बट मज़ा ईथर के साथ आता है पर ल्यूमिन के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा ना संजय भाई। हैंग आउट इवेंट है, Oh, फिर तो कर definitely. लेंगे। Great! So next time I see them, I'll say hi. And I guess I can share some of my candies with them too. Certainly. You can also tell my friend in Yenshang Tea House about what they're up to. I'm sure my friend would also like to say hi to them. Thank you, ma'am. You're welcome. Well then, fare thee well, Master Dugu. Until we meet again. हाँ, मज़ा तो ईथर के साथ ही आता है? ऐसा कुछ है क्या? Any of that देखना पड़ेगा sound भाई। strange to you? हम इमेजिन कर लेंगे। Yes, I heard it.
तो कुछ कुछ स्टोरी लाइंस तो चेंज होंगी है ना, ऐसा कुछ होगा ही. Ji seems to have a great reputation. Uncle Soon and Uncle Gao spoke highly of him, and Dugu Shuo seems to like him too. True. But the issue is, where did his sudden celebrity come from? It almost seems too good to be true. वैसे भी ये कौन सा हमें ल्यूमिन और एथर के नाम से बुलाते हैं, ट्रैवलर ही बोलते हैं ना ये तो. Sudden? Too good to be true? मेरे खुद के नाम से भी तो कहाँ ही What do बुलाते you हैं. mean? काश कि मेरे नाम से बुला रहे होते ये. So he returns cruelty with kindness and had to work to support his studies. These are the kinds of things that make someone well known in their hometown. But Uncle Soon said even his friends who travel far and wide hear about him wherever they go. That's a little over the top, if you ask me. एक गुक्कू भाई समझ गए, नोटी हो रहे हो. एक काम करेंगे ना, देखो वो क्वेस्ट कहीं से हम ढूंढ लेंगे कि वीडियो, तो वो भी हम देख लेंगे ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब पर ही देख लेंगे या कहीं भी जहाँ पर होगी वो, और मैं स्ट्रीम पर चला दूंगा, तो पहले हम उस हिसाब से कर लेंगे और वो वाला भी देख लेंगे सीन क्या है. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम कि एक बार ल्यूमिन के साथ कर लेंगे स्टोरी क्वेस्ट, और मतलब जो भी क्वेस्ट है वो, और वैसे देख भी लेंगे कि एथर के साथ ऐसा क्या अलग हो जाता है. भाई मुझे अब जानना है. Do you remember what Dugu Shuo said about Jur-E's stories? Clearly they left him with a good impression of the guy. But beyond that, he wasn't interested in the details. That's the reaction I would expect from any normal person. Plus, there's the fact that all this praise of Jur-E has only been happening within the last 2 or 3 months. His childhood, his studies, the thing with his neighbor. None of these are भाई recent ये कौन events. सा कैमरे का So एंगल है. why are these stories only going around now? ठीक है. When you put it like that, it is kind of strange. ल्यूमिन और नोएल करेंगे तो वो लगेगा. अच्छा, ऐसा कुछ सीन है क्या ये स्टोरी में, या कोई वीडियो क्रिएटेड है भाई? ऐसा तो नहीं कह रहे हो कुछ कि किसी ने बनाया है वो अलग से? हाँ. Of course, if that's all there was to it, I wouldn't look into it any further. Jur-E was born into a poor family. Paying people to get his stories out there is within the rules of the game as far as I'm concerned. The problem is, do you remember what Uncle Gao said about him? He's stayed poor his whole life. Everything he's earned he's either spent on studying, traveling, or paying off debts. I don't think he has the mora to pay for a publicity campaign. स्टोरी ही है इसी में है. ओ भाई, देखना बनता है फिर तो यार, करेंगे उसका कोई ये Right, and स्ट्रीम that पर भी करेंगे. changes everything. ऐसी It can कुछ mean a कुछ powerful इंटरेस्टिंग faction बताया is करो, trying to मैं gain कर दूंगा influence उनको over the Liu Qixing. पे शो. जो स्टोरी में है वो मुझे नहीं लगता इतना वैसा होगा, तो कर देंगे, दिखा That's the देंगे वो worst उस case पर. scenario. But all too often, the most pessimistic speculation turns out to be closest to the truth. Someone's trying to gain influence over the Qixing? That sounds serious. What should we do? गेम का इतना भी ख़राब नहीं है, बट एथर का के डायलॉग बहुत सस हैं. अरे Even भाई if we asked देखना Juri पड़ेगा. about it, surely there's no way he'd admit it. First, we need to find out who's supporting him. Don't worry, I've got a plan. Remember the current affairs and planning stage of the assessment? Since the successful candidate is duty-bound to implement their plan after taking office, their manifesto tells us their stance on key issues. Whoever is secretly helping Jur-E must be seeking to benefit from his actions after his appointment. So, we should be able to find some hints in Jur-E's manifesto on who we're dealing with. फ्लर्ट करता है एथर. फिर तो देखना पड़ेगा. मुझे इन है ना, इन कैरेक्टर से सीखना है भाई कि कैसे करते हैं. भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं है लिटरली. मैं थोड़ा अगर सीख पाऊँ ना इन सब चीज़ों से कुछ, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ.
क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैं नहीं कर पाता हूँ ऐसी बातें। अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो मैं सीखूंगा और देखूंगा, समझूंगा उस चीज़ को, फिर मैं भी ट्राई करूंगा। Come बट on, हो let's get सकता है back to कि Genshin Tea House. वो इम्पैक्ट ना आए। रियल वर्ल्ड में हो सकता है मैं उल्टा पिट जाऊं। तो देखते हैं, ऐसे स्टंट थोड़ा सा रिस्की है, पर अगर कुछ अच्छा लगा मुझे उसमें तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। Go back to Yansheng tea house and check the manifesto. होते, अरे अरे नहीं, अरे सी क्यों दब गया? एक्स 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 दबाओ भाई। Squall and Fury! Too slow. The wind rises. इतना दूर तो नहीं होना चाहिए, यहीं तो है। Quit following me. ऊपर ही जाना है टी हाउस पे। Jur-E's manifesto covers a huge range of topics. Looking for details that don't add up will be like trying to find a needle in a haystack. ट्री के नीचे क्या होता है मतलब? गोकू भाई देखो, इससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कुछ बढ़िया ही होता है, देखना पड़ेगा ये तो। I'll divide the reports into 2 piles. You take one, I'll take the other. When we're finished, we'll put our heads together. Officially, the assessment is already over, and I'll be expected to announce the results before long. So we have to get to the bottom of this as quickly as we can. Yikes! We better hurry! Whatever else Uncle Tian might think of Jur-E, the fact remains that he's one of his favorite students. Any evidence he's left is not going to be immediately obvious. We'll have to look carefully and think critically. Carefully check manifesto। यहाँ पर ही तो है। Made any discoveries? Not so far, but we're still looking. अरे देखो, यहाँ पे आके ये देखना चाहिए था। Even though Yelan took half, this is still a lot to get through. Well, we gotta start somewhere. Read chapter C. Due to variety of factors, sea storms have become stronger in recent years. I suggest we set up a special patrol unit to deal with sea monsters. The fleet should consist of the following: covers various issues related to coastal defense. Read chapter Rock. Much of Lewis' folk lore suggests that Rex Lapis left a great deal of wealth in the mountains of Liu. However, due to obstacles hindering the excavation operation at the chasm, many projects have been called off. आपने इनाजुमा का इवेंट किया था? इनाजुमा का इवेंट, इनाजुमा का इवेंट कौन सा वाला? बहुत सारे हैं वहाँ तो। The workers of the Black Cliff Forge have been idle near the Golden House for a long time now. They should be given first refusal if any suitable projects arise. Covers mining, tunnel construction and ruin exploration. या फिर तब गेम नहीं खेलते थे? देखो संजय भाई, मैंने जब इवेंट आ रखा था काजुआ का, ठीक है, उस टाइम से ये स्टार्ट किया है। मैंने पहली जो स्ट्रीम की है स्टार्टिंग की, डे 1 की, आप वो जाके देख सकते हो। तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मैंने किस दिन से खेलना चालू किया था। वो बिल्कुल वहाँ पे ये समझ लो कि स्टार्टिंग ही थी बस। उससे शायद एक दिन पहले हमने शायद वो वाला किया था जो ड्रैगन वाला है, ड्रैगन वगैरह मारने वाला, तो वो शायद हमने कर लिया था। उसके बाद बाकी 15 लेवल तक पहुँच जाए हम,
है ना, और कॉप मोड अनलॉक हो जाए हमारा, तो उस हिसाब से था, देख लो। तो मेरे को आइडिया नहीं है वैसे, काजुआ वाला जब आया था शायद तभी मैंने स्टार्ट किया था, काजुआ का वो आया था, तो उस टाइम पर इवेंट अगर चल रहा हो तो पता नहीं, क्योंकि इनाजुमा की स्टोरी खुलने में बहुत टाइम लग गया था। मैं पूरा स्टोरी स्टोरी अच्छे से ही कर रहा था मैं। रीड चैप्टर रोड्स। The treacherous terrain should around yeah, Huaguang Stone Forest and Kingyun Peak means the area has weak transport links. अच्छा जी. The sheer mountain peaks are connected only by rope bridge. They are dangerous to walk on a wholly unsuited to the transportation of goods. वैसे इनाजुमा वाला कौन सा इवेंट? मुझे भी नहीं आइडिया। These areas are rich in medicinal herbs and ore deposits. Building a road network around the mountains would be beneficial for everyone. Covers plans to build roads and bridges. Stop reading. Oh, this reading is giving Paimon a headache. भाई मुझे भी, पर Let's take a break. हेडेक तो नहीं दिया, पर वही है, इन्फॉर्मेशन तो मिली ना हमें कुछ चीज़ों के बारे में। Looks like I'm the first one back, as usual. Oh, hey! It's one of Yelan's little helpers, Shenhua! If you're back, that means you finished investigating Tianwei, right? You betcha. I visited all the commerce guilds and gathered a wealth of information. Every time they asked me to leave, but I always had another trick up my sleeve. Don't drag this out. Just tell us your findings. Yes, Lady Yelan. आयाका वाला, आयाका रिस करती है। To summarize my findings, most आयाका वाला people who किया had है। interactions with Qianwei will start out complaining about how proud and arrogant he is, but then go on to give a generally positive appraisal of him. The young master of the Feiyun Commerce Guild said that Qianwei appears arrogant, but he's very scrupulous in the way he आयाका वाला works. पर नहीं, एक मिनट, वो तो आर्कन क्वेस्ट में जो था वही किया है मैंने। Once he signs a contract with somebody, he treats them fairly regardless of their background. आयाका बैनर के टाइम पर आया था। अच्छा, आयाका बैनर के टाइम पे आया था, तो वो काजुआ से पहले आया था कि बाद में? बाद में तो था ही नहीं शायद आयाका वाला, इससे पहले आया होगा शायद, क्योंकि मैंने तो काजुआ वाले बैनर से स्टार्ट किया था जहाँ तक मुझे याद है। Who'd have thought? वो भी जाने ही वाला था। Is it possible that his reputation is fake? Is there any way you can check the accounts of the businesses under his name? In theory, that should be very difficult, but here's the thing. I asked around and found out that almost all of Qianwei's accounts are open to the public. Where he buys from and sells to should be confidential business information, but he doesn't seem interested in protecting it at all. आयाका के बैनर पे आया होगा तो मैंने तो किया तो होगा, पर अभी याद नहीं आ रहा। बहुत टाइम पहले की बात होगी ना फिर तो ये।